Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the world of mathematics, and your teacher is Hamad Hussain. Today we are going to discuss chapter number 3, that is integration or antiderivative. And we are going to solve exercise 3.6, that is definite integral. Before going to start the question, firstly we will recall what is meant by definite integral. Simple integration f of x dx is equal to capital F of x plus c. C is the constant of integration. If in indefinite integral we have a limit, lower limit as well as upper limit, then f of x dx is equal to capital F of b minus f of a. Capital F of b minus f of a, in simple word, upper limit put in the function minus lower limit put in the function. These are the two examples of the definite integral integration from 1 to 4, 5x minus 4 dx, integration from 1 to e 5 over x dx. These are the two examples of definite integral. There is a difference between indefinite integral and definite integral. Indefinite integral we have no limit, upper limit as well as lower limit. That's why in answer we add plus c. C is the constant of integration, while in the definite integral we have limits, lower limit as well as upper limit. So c is absent in definite integrals. Now these are the some properties of definite integral. Number one property is order of integration. If we have an integration from b to a f of x dx is equal to minus time a to b f of x dx, it means that if we replace upper limit by lower limit and lower limit by upper limit, then we have negative sign out of the integration. This property is order of integration. Zero width interval. If integration from 0 to a f of dx is equal to 0. This means that if lower limit is equal to upper limit, then our answer is equal to 0. Then our answer will be equal to 0. Constant multiple. If we have a integration from a to b k f of x dx, where k is any constant, then k come out from the integration, then we have k integration from a to b f of x dx as constant out from the limit, as constant come out from the derivative, similarly constant out from the integration and definite integrals. Sum and different. If we have two functions that is added or subtract and applying the limits, then this will be equal to integration from a to b f of x dx plus minus integration from a to b g of x dx. If we separately add both function and applying the limits, or if we add or subtract the function and then applying the limits, then both answer will be equal. And the last and a very important property, that is additive property. If we have a limit interval from a to c f of x dx, then we can break a into c like a to b f of x dx plus b to c f of x dx. This property is additive property of definite integrals. Now these are the applications of definite properties. In calculus, integral of a function is an extension of the concept of sum. The process of finding integral is called integration. The process is also used to find the measure of area, volume, mass, displacement and etc. And that you studied earlier how to find area under the curve by using definite integral in previous lectures. Now we will move to exercise 3.6. Question number 1. Evaluate the following integrals. Definite integrals.
Our part number 14 is integration from 0 to 2 e raised to power minus x by 2 minus e raised to power minus x by 2 dx. Question is integration from 0 to 2 e raised to power x by 2 minus e raised to power minus x by 2 dx. First step, apply limit on both functions 0 to 2 e raised to power x by 2 dx minus 0 to 2 e raised to power minus x by 2 dx. And you know that integration of e raised to power x by 2 is e raised to power x by 2 divided by derivative of power. What is power? X by 2, and derivative of x by 2 is 1 by 2. So e raised to power x by 2 divided by 1 by 2 from 0 to 2 minus, now e raised to power minus x by 2 integration is e raised to power minus x by 2 and derivative of minus x by 2 in the denominator. What is the derivative of x by 2? Derivative of x by 2 is 1 by 2 with minus 1. This minus and this minus, minus into minus is plus, and 1 by 2 when goes to the numerator it will become 2. Similarly this 1 by 2 also becomes 2. So we have 2 e raised to power x by 2 from 0 to 2 plus, why? Because minus 1 into minus 1 is plus 1. 2 e raised to power minus x by 2 from 0 to 2. Now we can replace limits. First 2 e raised to power 2 by 2. Why? Because upper limit in first case is 2 e raised to power 2 by 2 minus lower limit. What is the lower limit? Lower limit is 0. So e raised to power 0 by 2 plus second function is 2 e raised to power minus upper limit is 2 minus 2 by 2 minus formula upper limit minus lower limit. What is the lower limit? Is that is 2 e raised to power minus 0 by 2. 2 by 2 is 1 and e raised to power 0 by 2 means that e raised to power 0 plus e raised to power minus 2 by 2 means that e raised to power minus 1 minus e raised to power minus 0 minus 0 or 0. E raised to power 1 is e raised to power 1 and we know that e raised to power 0 is 1 e minus 1. Here we will take 2 common from these two terms. E raised to power minus 1 means that 1 over e and minus e raised to power 0 means that minus 1. Minus 1 and minus 1 is minus 2 e plus e is 1 over e minus 2. Taking e as the LCM, we have e square plus 1 minus 2 e over e. And in numerator, we can see that it is a formula of a minus b whole square. In our case, it is a formula of e minus 1 whole square. So final answer is 2 times e minus 1 whole square over e. 2 times e minus 1 whole square over e. This is your part number 14. Now, part number 15. Integration from 0 to pi by 4 cos theta plus sin theta divided by 2 cos square theta d theta. Pi by 4 means that 45 degree. Integration from 0 to 45 degree cos theta plus sin theta divided by 2 cos square theta sin theta. Let I is equal to integral 2 cos square theta can be written as 1 plus cos 2 theta. 1 plus cos 2 theta. That is equal to 2 cos square theta. Cos square theta is 1 plus cos 2 theta over 2. Now, cos theta divided by 2 cos square theta plus sin theta divided by 2 cos square theta. This cos theta cancel with the power of cos square theta. We have 1 over 2 cos theta d theta, and cos theta, our cos square theta can be written as cos theta into cos theta.
1 over 2 out from the integral, we have 0 to pi by 4. Sec 1 over cos theta is secant theta into d theta. Plus, again 1 over 2 out of the integration, we have sin theta over cos theta d theta, and we know that this sin theta over cos theta is equal to tangent theta, and 1 over cos theta is secant theta. So we have 0 to pi by 4 secant theta tan theta d theta. Now applying the integration of secant theta is natural log of secant theta plus tan theta from 0 to pi by 4 plus 1 by 2. Integration of secant theta tan theta is secant theta from 0 to pi by 4. Now we will replace limit. First of all upper limit, then lower limit. 1 by 2 natural log of upper limit, replace theta is equal to pi by 4 secant pi by 4 plus tangent pi by 4 minus upper limit minus lower limit, natural log of secant 0 plus tangent 0 plus 1 by 2. Now replace theta is equal to pi by 4 in this situation, secant pi by 4 minus secant of 0. Secant pi by 4 means that 1 over cos pi by 4, and 1 over cos pi by 4 means that 1 over cos 45, and we know that cos 45 is 1 over under root 2. So secant pi by 4 is under root 2. Tan pi by 4 means that tan 45, and we know that the value of tan 45 is equal to 1. Secant 0 plus tangent 0, we have natural log of 1 plus 0 plus 1 by 2, again secant pi by 4, that is square root of 2, and secant 0 is 1. Secant 0 is 1. Now 1 over 2 natural log of square root of 1, 2 plus 1 minus 0. Why? Because natural log of 1 is 0. Natural log of 1 is 0 plus 1 by 2 square root of 2 minus 1. Now take square root of 2 out common, as common we have 1 by 2 natural log of square root of 2 plus 1 plus square root of 2 minus 1. That is your final answer. Student, this is your part number 15 of exercise 3.6. Now part number 17. Integration from pi by 6 to pi by 4 cos square theta into cot square theta d theta. Pi by 6 means that 30 degree, and pi by 4 means that 45 degree. Cos square theta cot square theta into d theta. Cot square theta can be written as cosecant square theta minus 1. Open subbracket, we have cos square theta into cosecant square theta minus cos square theta. And cosecant square theta can be written as 1 over sin square theta, and we know that cos theta over sin theta is cot theta, and cos square theta over sin square theta is cot square theta. Apply the integral on cot square theta minus cos square theta. Again replace the value of cot square theta. What is the value of cot square theta? Is cosecant square theta minus 1. And replace the value of cos square theta, that is 1 plus cos theta divided by 2. 1 plus cos 2 theta divided by 2. One plus cos 2 theta, here 2. 1 plus cos 2 theta divided by 2 is equal to cos square theta. Now we open the integral. Integration cosecant square theta minus integration of 1 d theta minus 1 by 2 integration theta d theta minus cos 2 theta by 2 d theta. We have integration of cosecant square theta is minus cot theta, and limit from pi by 6 to pi by 4. Integration of 1 with respect to theta is theta minus 1 by 2 integration 1 with respect to theta is theta, and this means that 1 minus 1 by 2 is minus 3 by 2. Minus 1 minus 2 is minus 3 by 2 into theta from
pi by 6 to pi by 4. Minus 1 by 2 cos 2 theta. And we know that the integration of cos 2 theta is sin 2 theta divided by derivative of angle. And here angle is 2 theta and derivative of 2 theta is 2. Which means that minus 1 by 2 sin 2 theta over 2 from pi by 6 to pi by 4. Now put the limits minus cot pi by 4 and upper limit minus lower limit. This minus with the formula of lower limit minus we have plus cot pi by 6 minus 3 by 2. Why? Because this minus 1 and this minus 1 by 2 will be minus 3 by 2 and integration of 1 with respect to theta is theta. Pi by 6 to pi by 4. Minus 1 by 2 sine 2 pi by 4 upper limit minus sine 2 pi by 6 lower limit. Upper limit minus lower limit. Cot 45 mean that 1 over tan 45 and we know that the value of 1 over tan 45 is 1. This means that minus cot 45 plus cot 30 degree is minus 1 plus square root of 3. Minus 3 by 2 upper limit is pi by 4 minus lower limit is pi by 6 minus 1 by 2. This 2 cancel with the 4 we have sin pi by 2. Sin pi by 2 means that sin 90 and value of sin 90 is 1. That's why is 1 by 2. And 2 cancel with the 6 we have pi by 6. Pi by 6 pi by 3 and pi by 3 means that 60 degree and we know that the value of sin 60 degree is square root of 3 by 2. Pi by 4 and pi by 6 after taking the LCM and simplification we have pi by 12 and 1 by 2 minus square root of 2 into 2 is minus square root of 3 by 4. Open the brackets minus 1 plus square root of 3 and 3 cancel with the 4 and 4 12 and 4 into 2 is 8 minus pi by 8. Minus 1 by 2 into 1 by 2 is minus 1 by 4. This minus with this minus is plus 1 into square root of 3 is square root of 3 and 2 into 4 is 8. After taking the LCM we have 9 square root of 3 minus 10 minus pi over 8 is our final answer. Now part number 18 integration from 0 to pi by 4 cos 4t dt. Here angle is t cos 4t dt from 0 to pi by 4. Pi by 4 means that 45 degree. Cot 4t cos 4 theta. These type of questions you have already solved in chapter number 10 of class first year. Cos 4t can be written as cos square t whole square and value of cos square t is 1 plus cos 2t by 2 whole square. Open the formula in the numerator a square plus 2ab plus b square and 2 square is 4. This fall out from the integration. We have 1 plus 2 cos 2t plus cos square 2t. Again cos square 2t. We know that cos square t is 1 plus cos 2t by 2. But if we have cos square 2t, here angle multiply by 2. So this angle also multiply by 2. Then we have 1 plus cos 4t by 2. Now taking the LCM 2, we have 2 into 1 is 2 plus 4 cos 2t plus 1 plus cos 4t whole divided by 2. 2 into 4 is 8. We have 3. Why? Because 2 plus 1 is 3 plus 4 cos 2t plus cos 4t. Now applying the integration. 3. Integration of 1 with respect to t is t, so 3t plus 4. Integration of cos 2t is sin 2t divided by angle of derivative of angle that is 2. Why? Because derivative of 2t is 2. Integration of cos 4t is sin 4t divided by derivative of 4t that is 4 from 0 to pi by 4. Now put upper limit in all cases 3 pi by 4 plus 2 into 4 is 2. Sin 2t means that sin 2 pi by 4. Upper limit
plus sine 4t means that sine pi by 4 whole divided by 4. In all three terms we will replace t by pi by 4. Upper limit now minus lower limit. What is lower limit? That is 0, 3 into 0 plus 2 sine 2 into 0 plus sine 4 into 0 over 4. And we know that sine 0 is 0. Sine 0 is 0. 3 pi by 4 plus 2 sine 90, that is sine 90, that is 0. Sorry, sine 90 is value of sine 90 is 1. This 4 cancel with this 4, we have sine pi and value of sine pi is 0. 0 sine 0 is 0, sine 0 is 0 by 4. This means that we have only two terms, 1 by 8, 3 pi by 4 plus 2. After taking LCM and open the brackets, we have 3 pi by 8 plus 32. That is our final answer. 3 pi by 8, 3 pi plus 8 divided by 32. Now, part number 21, that is integration from 0 to pi by 4 secant theta divided by sine theta plus cos theta d theta. 0 to pi by 4 means that 0 to 45 secant theta divided by sine theta plus cos theta d theta. Let I is equal to integration. Taking cos theta common, we have cos theta plus sine theta over cos theta plus 1. And 1 over cos theta means that secant theta, secant into secant is secant square theta. And sine theta over cos theta is tangent theta plus 1. And what is the derivative of tangent theta? Derivative of tangent theta is secant square theta. Now let 1 plus tan theta is equal to t. Taking the differential d theta, dt is equal to secant square theta d theta. If when x equal to 0, then t approaches to 1, and when x is equal to pi by 4, t approaches to 2, which means that limit from 1 to 2 secant square theta d theta is dt, and 1 plus tan theta 1 plus tan theta is equal to t. Now function with derivative in the numerator means that natural log of function from 1 to 2. Now easily applying the upper limit, that is 2, natural log of 2 minus applying the lower limit, that is 1. And we know that natural log of 1 is 0. So natural log of 2 minus 0 is equal to natural log of 2. That is your final answer. Student, from this case you can also write natural log of 1 plus tan theta. Why? Because we know that derivative of 1 is 0 and derivative of tan theta is secant square theta d theta. So from this step you can direct write answer natural log of 1 plus tan theta from 0 to pi by 4. And if you want to solve this by supposition method, then you have to convert your limit also. Now part number 22, integration from minus 1 by 5 minus 1 to 5 x minus 3 dx absolute value of x. स्टूडेंट, ये हमारे पास एक एब्सोल्यूट फंक्शन है जिसकी बेसिक डेफिनेशन आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी है। वो क्या होती है जी? x मॉड जो है वो इक्वल टू होता है माइनस एक्स के अगर x की वैल्यू हमारे पास क्या हो, लेस देन 0 हो, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x जो है वो पॉजिटिव होती हैं अगर x की वैल्यू हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन है फ्रॉम x माइनस 3dx। आपने इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो क्या थी? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और एच ऑफ एक्स की फॉर्म में हम उसको तोड़ सकते हैं। अगर ए टू जी हो तो बीच में बी को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ए इज लेस दैन और इक्वल टू बी, बी इज लेस दैन और इक्वल टू सी। सपोज अगर ए से सी तक लिमिट है तो हम इसको लिख सकते हैं ए टू बी जी ऑफ एक्स का फंक्शन प्लस बी टू सी एच ऑफ एक्स का फंक्शन। स्टूडेंट्स, अब यहाँ हमारे पास आ रहे हैं एक्स माइनस 3 और लिमिट्स हमारे पास स्टार्ट हो रही है -1 to 5, मीन्स डैट वैल्यूज आएंगे हमारे पास -1,
0, 1, 2, 3, 4 and 5. By according to basic definition of absolute function, यहाँ इसका फंक्शन में यहाँ a की वैल्यू हमारे पास आती है 3, a is equal to 3. तो इसका मतलब है हमने इसको तोड़ना है फ्रॉम -1 to 3, तब हमारे पास फंक्शन क्या होगा, और फिर 3 to 5 तब हमारे पास फंक्शन क्या होगा. x माइनस 3 पॉजिटिव हमें आंसर देगा जब हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 3 से ग्रेटर देन होगी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन. अगर ग्रेटर देन 0 होता है, इस केस में 0 है हमारे पास, तो इस वजह से ग्रेटर देन 0 हो तो आंसर क्या होता है, पॉजिटिव. अगर ग्रेटर देन 3 हुआ तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव. और अगर लेस देन 3 हुआ तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव अकॉर्डिंग टू बेसिक डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन. -1 to 3 हमने 5 है, इसको तोड़ दिया -1 से 3 और फिर 3 से 5. कहते हैं कि अगर 3 से 5 का अगर जो फंक्शन 3 से बड़े वाला फंक्शन, यहाँ ये जो फंक्शन है ये 3 से स्मॉलर है, ठीक है, क्योंकि 3 इसकी अपर लिमिट है. ये वाला फंक्शन साइड जो है ये 3 से ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब है यहाँ हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, पॉजिटिव x माइनस 3, और यहाँ हम लोग रिप्लेस करेंगे नेगेटिव x माइनस 3. अगेन देख ले, एब्सोल्यूट फंक्शन है, इसको हमने तोड़ना है एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ. पॉजिटिव के साथ हम तब तोड़ते हैं जब हमारे पास वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू a. इस केस में a क्या है हमारे पास 0, दैट्स वाई लिखा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. और इस केस में हमारे पास जब हम इसको कंपेयर करेंगे x माइनस a के साथ, तो x की जगह x आ गया, माइनस की जगह माइनस आ गया, और a की वैल्यू क्या आ गई 3. कि अगर जो 3 से बड़े वाला फंक्शन है उसके साथ क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, और 3 से छोटे वाले फंक्शन के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव. तो ये इसकी अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट क्या है -1, मतलब कि ये 3 से छोटे वाला फंक्शन है तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे माइनस, और ये 3 से बड़े वाला फंक्शन है तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे प्लस. बस उसके बाद अब सिंपल इंटीग्रेशन है, माइनस बाहर आ जाएगा, x माइनस 3 प्लस 3 to 5 x माइनस 3, पावर रूल लगेगा, लिमिट अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 8 + 2 डेट इज इक्वल टू 10. ये आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट आता है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के पास. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 25. इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3, 3x square minus 2x plus 1 divided by x minus 1 x square plus 1 dx. डिनोमिनेटर को अगर हम ओपन करें तो हमारे पास आता है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एंड हमें पता है कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, 1 का होता है 0. मीन्स डैट नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है. दैट्स वाई इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन फ्रॉम 2 to 3. पहले अपर लिमिट रिप्लेस करेंगे, माइनस लोअर लिमिट रिप्लेस कर दी, सिंप्लीफिकेशन की आंसर आ गया आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 20 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5. अकॉर्डिंग टू लॉग a माइनस b हम इसको लिख सकते हैं लॉग a ओवर b, तो 20 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा आंसर आपके पास 4. तो फाइनल आंसर होगा जी नेचुरल लॉग ऑफ 4. पार्ट नंबर 26. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 4 sin x minus 1 divided by cos square x, sin x minus 1 divided by cos square x. ये आपके पास क्या है जी क्वेश्चन. दोनों के साथ अलग-अलग डिवाइड कर देंगे जी. sin x डिवाइडेड बाय cos square x माइनस 1 ओवर cos square x. sin x को हम लोग लिख सकते डिवाइडेड बाय cos square x को लिखेंगे sin x ओवर cos x इंटू cos x, और साइन ओवर कॉस मिल जाएगा हमारे पास 10 और 1 ओवर कॉस हो जाएगा सीकेंट. तो नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स और 10x पे जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सीकेंट एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स होती है हमारे पास टेंजेंट एक्स के. सीकेंट एक्स और 10x इंटीग्रेशन होगी सीकेंट एक्स, और सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आ गई हमारे पास 10x फ्रॉम 0 to pi by 4. अब हम इस पर लिमिट रिप्लेस कर देंगे, अपर लिमिट दोनों में रिप्लेस करेंगे, देन फार्मूले का माइनस नहीं है, ये वाला माइनस है, देन लोअर लिमिट, दोनों में लिमिट्स रिप्लेस कर दी. आप दोनों में अलग-अलग रिप्लेस कर सकते हैं. सीकेंट पाई बाय 4 माइनस सीकेंट 0, फिर माइनस tan पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट ऑफ 0. तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 -1 -1 प्लस 0. वाई? बिकॉज
माइनस और माइनस क्या होते हैं आपके पास प्लस, और tan 0 क्या आते हैं 0, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 इज योर फाइनल आंसर. नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. cos integration from pi by 6 to pi by 2 cos x divided by sin x into 2 plus sin x dx. स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन. लेट कर लें जी sin x इज इक्वल टू टी, तो डी टी इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स. तो लिमिट्स भी चेंज होंगी इस पोजीशन में. t इज इक्वल टू पाई बाय 6. जब हम t की जगह पाई बाय 6 को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास x की जगह पाई बाय 6 को रिप्लेस करेंगे तो t का आंसर आ जाएगा 1/2. मतलब कि लोअर लिमिट हमारे पास हो जाएगी 1/2. और जब हम x की जगह रिप्लेस करेंगे पाई बाय 2 को तो हमारे पास आ जाएगा इस वाले फंक्शन में sin पाई बाय 2 sin 90, वो कितना होता है 1. तो अपर लिमिट कितनी आ जाएगी 1. तो आपने बात याद रखनी है कि जब भी हम लोग सपोजिशन मेथड सपोजिशन की तरफ जाएंगे तो लिमिट्स भी हमारे पास चेंज होती हैं. तो ये आ जाएगा 1/2 to 1 dt. sin x की जगह आ गया t 2 plus t. तो अब हम सिर्फ इसके ये जो फ्रैक्शन है इसको लेंगे जो है हमारे पास 1/t 2 plus t. तो जिसको हम लिख सकते हैं a/t प्लस b/2 प्लस t. जैसे आप लोगों ने 3.5 में क्वेश्चन किए या चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 3.1 क्लास फर्स्ट में आपने पार्शियल फ्रैक्शन की केस नंबर 1 की. एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 प्लस टी. बी टी पहले t इज इक्वल टू 0 पुट किया, a का आंसर आ गया आपके पास 1/2. जब t इज इक्वल टू -2 पुट किया, b का आंसर आ गया आपके पास -1/2. दोनों की जगह रिप्लेस कर दिया 1/2/t प्लस -1/2/2 प्लस t. हमारा मकसद पार्शियल फ्रैक्शन ही था. अब हमने इस पर अप्लाई करनी है लिमिट्स. तो लेफ्ट साइड पे अलग लिमिट अप्लाई करेंगे एंड राइट साइड पे अलग. 1/2 बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/2 to 1/t dt माइनस 1/2 बार आ गया 1/2 प्लस t. नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन और लिमिट आ जाएगी. माइनस 2 का डेरिवेटिव होता है 0 और t का डेरिवेटिव होता है 1 ऊपर मौजूद है तो नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन 2 प्लस टी फ्रॉम 1/2 to 1. अब हम इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1/2. आपको पता है नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है तो आ जाएगा 0 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 माइनस 1/2. नेचुरल log of 2 plus 1 is 3. टेकिंग LCM 3 minus 5/2. 1/2 होल कॉमन ले लिया माइनस नेचुरल log of 1/2 माइनस नेचुरल log of 3 प्लस नेचुरल log of 5/2. तो log की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देंगे. तो log a माइनस b को हम लिख सकते हैं log a ओवर b की फॉर्म में. तो 1/2 नेचुरल log of 5/3 is your final answer. Thank you students. If you have any question you can ask me anytime. Thank you and have a